तो उदयपुर का सफर शुरू हुआ मुंबई से, इस बार ट्रेन से। वैसे तो सफर था 15 घंटों का, लेकिन काम करते करते कब वक्त निकल गया पता ही नहीं चला। और वैसे भी ट्रेन की जर्नी का तो मजा भी अलग ही होता है। ओके, तो ट्रेन अभी फाइनली चित्तौड़गढ़ पहुंची है। चित्तौड़गढ़ जंक्शन एज यू कैन रीड बिहाइंड मी। एंड यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट है। आई मीन आई गेस कि 10 मिनट का हॉल्ट है इज व्हाट आई रेड। अगर नहीं हुआ 10 मिनट का हॉल्ट तो मैं आराम से बाहर व्लॉग कर रही हूँ। जब भी मेट वाला सीन हो जाएगा मुझे भागना पड़ेगा। बट एनीवे, वी हैव अ 10 मिनट हॉल्ट हियर। आफ्टर दिस वी हैव अनदर 3 to 4 stations and then we will be reaching Udaipur after that. So yeah. Here I am finally in the city of lakes and city of palaces in Udaipur and अभी फ़िलहाल मैं बस गाड़ी में बैठी हूँ। The drivers just come to pick me up and हम जा रहे हैं हमारी होटल की ओर। I'll tell you more about which hotel and all of that once we get there. I'll show you the hotel in fact as always. But say hi to Pratik who's here with me today. Pratik is going to be handling drone on this shoot. So all the beautiful drone shots you see are by Pratik. You will see his Instagram handle also in the description if you want to see more of his work. So that's Pratik. रास्ते में ड्राइव करते करते जब आसपास लेक्स और उससे लगे साइडवॉक्स दिखे, तब समझा कि उदयपुर को आखिर सिटी ऑफ लेक्स क्यों कहते हैं। And a 30-minute drive later, there I was at my hotel, the Royal Retreat Resort and Spa. Hello from Udaipur, the city of lakes. Finally, I have checked into my hotel. What you see behind me is my home, and I'm staying at this place which is called as the Royal Retreat Udaipur, and it is such a gorgeous property. पता है ये property इतनी huge है कि मुझे इस पूरी property को पहले देख के रेकी करने में around 35 to 40 minutes लगे. Like that's how huge this property is, and that's how gorgeous also it is. But I quickly want to show you what my property looks like from the inside. What my room looks like from the inside. यहाँ पे टोटल 120 रूम्स है एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि हर एक रूम अलग है एक दूसरे से। बट दिस वंस माइन, इट्स कॉल्ड एज द नाइट जार एंड इट्स अ वेरी गॉर्जियस स्वीट। तो मैं आपको अंदर लेके जाती हूँ। लेट मी क्विकली शो यू माई रूम। Started with just a piece of land in 1988 and then gradually increasing inventories, the family managed to piece together what you are looking at today. रॉयल रिट्रीट रिसॉर्ट एंड स्पा एक हेरिटेज होटल है और यहाँ आपको उदयपुर की रॉयल्टी का पूरी तरह से एहसास होगा। दिस इज माय स्वीट, लेट्स क्विकली टेक अ लुक इनसाइड। So Naija comes with 2 floors. As you'll enter, you'll find a seating area और ऊपर जाते ही you'll find yourself at the bedroom. आपका तो पता नहीं, लेकिन महाराजा वाली फीलिंग तो मुझे इसे देखकर ही आ रही थी। The bedroom further opens up to a balcony area. और एक और बालकनी एरिया है, दैट्स अ ह्यूज सिट आउट। प्रॉपर्टी के सेंटर में एक बड़ा सा लॉन है अलॉन्ग विद अ स्विमिंग पूल।
There's also an in-house restaurant spread across 3 stories. And while you're at it, यहाँ की beautifully done up alleyways पे जरा गौर करना मत भूलना. Oh, and you'll also find 2 vintage classics, a Bentley and an Austin 10 here, from the owner's personal collection. Okay, so we're heading to Lake Pichola now, which is one of the most popular tourist locations out here in Udaipur, because I wanted to see a sunset from there, and it is one of the best places to actually catch the sunset from. This is what I've heard, it is what I've seen, but I'm going to go there and check it out for myself today. So let's see if we are able to get an amazing sunset from Lake Pichola. We've just left from the property and we're heading there. So लेक पिचोला तक आपकी गाड़ी जा नहीं पाएगी given the super narrow roads, तो एक पॉइंट तक कार आपको छोड़ देगी and then वहां से you have to take an auto to go to the lake. I know I'm always the one to romanticize sunsets and sunrises for you, पर यहाँ इस लेक के पास डूबते हुए सूरज को देखकर आखिर किसे इस शहर से प्यार नहीं होगा? आपका तो पता नहीं, लेकिन a sunset at Lake Pichola is one I'd always hold very close to my heart. रात को प्रतीक and I head out for dinner at this place called Enigma. ये हमारे होटल के ओनर का ही है and he offered to host us here for the night. And hold your horses, क्योंकि Enigma में एंटर करते ही ऐसे लगेगा कि मानो किसी महल के डाइनिंग एरिया में पहुंच गए हो. The vibe is quite great and there's even a rooftop area जहां I chose to sit. Everything from the drinks to the food menu is quite a vibe and मेरी तरफ से ये जगह एक definite recommendation है if you're somebody who's looking for a fine dine in the city. Suppose dinner, we called it a day. Good morning from day 2 in Udaipur. Well, with a breakfast like that, good morning तो होनी ही थी ना. Okay, so I have had breakfast, I just got ready and now I am leaving to go out and explore a lot of places in Udaipur. There are a lot of things that I want to see today. बहुत सारी जगह है जो मैंने list down करके रखी हुई है. So let's see, whatever we are able to complete, we shall be able to go there and see them and obviously I will show them to you as well. It's a beautiful, nice day. फिलहाल तो ज़्यादा धूप नहीं है. As you drive in the city, आंखें बस गाड़ी के बाहर रखना. उदयपुर की खूबसूरती को कैद करने के लिए keep your eyes and heart both open. Views of the beautiful blue Fateh Sagar and Pichola make the city look like an eastern version of Venice. Drives that you'll never forget. है तो पहली जगह मैं पहुंची आज सहेलियों की बारी. ये उदयपुर में एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है. कहने को तो बस एक गार्डन है, लेकिन इसकी हिस्ट्री काफी इंट्रीगिंग है और यहाँ का आर्किटेक्चर उससे भी ज्यादा कमाल. Okay, so I am at the beautiful Saheliyon-ki-Bari. Basically, Saheliyon-ki-Bari is a garden जो 17th century में महाराणा संग्राम सिंह ने अपनी जो
क्वीन थी उनके लिए बनाया था, because when they got married and when the queen came to his home, apparently she came with 48 of her maidens. तो उन्हें कोई ऐसी जगह चाहिए थी where you know they can just leisurely sit and be away from politics of you know all the politics and all of that. So महाराजा ने उनके लिए और उनकी सहेलियों के लिए ये जगह बनाई थी. So they would often come over here, relax, just spend some leisure time by the fountain, and यहाँ पे बैठने की भी काफ़ी जगह है. So yeah, that's the history bit. But अभी मैं आपको थोड़ी इस जगह को भी दिखाती हूँ. It's a very beautiful place. You can just come here. करने के लिए पर्स से यहाँ पे इतना कुछ है नहीं, but it's a very beautiful place to just come sit, spend some time, provided it's not too sunny. हम सुबह में आए हैं तो थोड़ी धूप कम है, but it's a nice place. So let me show you around कि यहाँ पे क्या है. तो मेरी मानो तो pick a breezy afternoon and just come and sit here and spend some time. Basically there are a lot of different areas in this entire garden. Okay, there are different fountains, like जैसे मेरे पीछे है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग fountains हैं और बहुत सारे dedicated areas बनाए हैं. जैसे कि this area that I'm standing in with all of these green plants around me, इस area का नाम है सावन भादो. यहाँ पे बाहर एक बोर्ड लगाया हुआ था. So सावन भादो is basically you know पुराने ज़माने में ACs या fans नहीं हुआ करते थे. This is like way back when this was built. तो उस ज़माने में, because when it used to be really hot in the summers, the only way for these people to cool down was through you know being amongst a lot of greenery, क्योंकि उससे ठंडक मिलती है थोड़ी. So which is why this area was built especially for the summer times, so that when it's really hot, people can, you know, not people actually, the queen and her friends could come and she could sit around in this greenery and with this fountain, so that you know it kind of helps in cooling a little bit. So that's the idea of this area. Quite thoughtful, hai na? I mean, these constructions that these people have done in the past and the history that it comes with, the reasoning it comes with, quite intriguing to know. उदयपुर जैसे सिटी में आकर शॉपिंग ना करना वुड बी ऑलमोस्ट क्रिमिनल. बाजार तो यहाँ भर भर के मिलेंगे. राजस्थान के फेमस फैब्रिक्स, मोजरी, बैग्स और ज्वेलरी के बारे में तो सब जानते हैं. तो लेट्स टेक अ क्विक स्ट्रोल अक्रॉस उदयपुर's फेमस हाथीपोल मार्केट. And this goes without a saying, लेकिन राजस्थान से यहाँ का फेमस बांधनी और लेरिया प्रिंट्स को खरीदना मत भूलना. After all, something to take back home and remind you of the city. शॉपिंग तो जम के कर ली, तो अब खाना भी जम के खाना बनता था. एंड बाय जम के आई रियली मीन लाइक जम के. राजस्थान इज फेमस फॉर इट्स थालीज फुल ऑफ लोकल फेवरेट्स. तो काफी ढूंढने के बाद मैं यहाँ जा पहुंची. So finally here at this Amantra restaurant for lunch. Basically Amantra hotel है जिसके अंदर रेस्टोरेंट है which is called as नैवेद्य. तो हमें एक्चुअली ट्रेडिशनल राजस्थानी थाली खानी थी, बिकॉज ऑब्वियसली इफ़ यू कम टू राजस्थान एंड नॉट हैव द थाली देन व्हाट्स द पॉइंट, राइट? तो आई वांटेड टू हैव लाइक अ प्रॉपर राजस्थानी थाली एंड दिस इज़ द थर्ड रेस्टोरेंट दैट आई एम कमिंग एट. इसके पहले हम 2 रेस्टोरेंट्स गए, कहीं पे थाली नहीं थी, कहीं पे बहुत ज़्यादा वेटिंग था. सो हियर्स अ गुड सजेशन फॉर यू ऑल. इफ़ यू ऑल ऑल्सो वांट टू ट्राई द ट्रेडिशनल राजस्थानी थाली देन कम टू दिस रेस्टोरेंट. सारे डिटेल्स तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एज यूजुअल मिलेंगे. लोकेशन भी नीचे मैंने लिखा था एंड यू विल नाउ बी सीइंग द शॉट्स ऑफ द फूड एज वेल. वंस आई हैव इट आई विल लेट यू नो कि टेस्ट भी कैसा है. सो इट्स अ रिकमेंडेशन एटलीस्ट अभी that if you are looking for a Rajasthani Thali place, then this is a good suggestion.
the thali comes with some local staples such as keer sangri, gatte ki sabzi, dal bati and kadhi. And in case you aren't aware, तो दाल बाटी को सही तरह से खाने का तरीका भी आपको यहाँ बताया जाएगा. Lunch के बाद I headed to visit the city palace of Udaipur. As you walk through a green garden path, you'll reach a point where you can sit by Lake Pichola or choose to go inside the palace. I did not want to go inside at this point, so I just spent some time watching the palace from outside, seated by the lake. Also another quick suggestion, अगर उदयपुर जाओ तो यहाँ की किसी आर्ट गैलरी या पेंटर्स वर्कशॉप को जरूर विजिट करना. I'm not specifying any particular one क्योंकि यहाँ काफी सारे मिलेंगे. And the artwork is quite unique to the city, चाहे पेंटिंग्स हो या फिर वॉल मुराल्स. शाम होने आई थी और मुझे सनसेट देखने जाना था to a spot from where I could not just watch the sun go down but also the entire city. तो लेक पिचोला वाले एरिया में I went back again today, ऑटो लेके through those narrow lanes. Okay, so I found this beautiful hotel which is called as Hotel Sarovar, and this is a definite recommendation if you want to come and get, you know, the entire see the entire city of Udaipur from one place. You can come sit here at their rooftop restaurant and just look at the view. मैं आपको व्यू थोड़े बेटर शॉट्स में दिखाती हूँ in a second, but I just wanted to come by to recommend this place. It's called as Hotel Sarovar. All the details will be in the description. This is basically a hotel, so they have rooms and stuff which is really beautiful, really cool. But उनके rooftop पर ये restaurant भी है जहाँ पे you can just sit. सरोवर का वाइब काफी अलग था and totally unmatched. This place is something I'd highly recommend if you visit Udaipur. The views will blow your mind. और क्योंकि आज मेरी उदयपुर में आखिरी शाम थी, I don't want to leave soon. तो यहीं बैठे बैठे शाम की रात भी कब हो गई पता ही नहीं चला. Oh, and there's also a live music session that happens here daily. So that place was such an amazing vibe. We just didn't want to get out of there, but late हो रहा था and we have to wake up tomorrow at 4 a.m. because we're leaving for Jaipur tomorrow. So which is why we had to get out of that place. But either way, we're just looking for an auto now क्योंकि ये जो गलियाँ हैं, these are so narrow. You cannot take a car inside or anything. So we have to take a small auto and get out of these lanes. Well, that also brings me to the end of this video. लेकिन आप बने रहना क्योंकि उदयपुर से निकलकर हम जा रहे हैं towards the Pink City, Jaipur. Until then, goodbye.